Most difficult of what? Most difficult of numericals with respect to examination. Okay. Some light issue. I'm trying to fix that, but still, uh, I hope you are well seated, students. And see, I'm just waiting. A couple of more students are joining probably. We are going to look at the theory with this, with the perspective of something that you must have done in the past. So exam prep, initially right now what we're doing, we are finishing the core concepts with respect to all the essentials. You must have done it, you might not recollect it. Or maybe it would seem that you're doing this for the first time. Whatever the case is, you have to ensure that you are thorough with this right now and you're conscious of it. If we learn this short term, and if we don't remember this for long term, by the time you appear for the exam, you will find it very difficult to recollect. I'll give you a question. Everyone write a question and just randomly try and give me a solution if you know or you don't. When I say give me your answers in Zoom chat, you will uh, drop me answers, like whatever your answer is, whether you've got the answer or you have not got the answer. It is something related to 1 by 60. Now, with the hint, I am sure most of us will be able to solve. If you can, great, I'll still solve. If you cannot, it's okay, I'll still be showing it to you. Students, whoever has doubts with respect to other topics, of course, we're going to cover everything. But make sure that your doubts are discussed or at least parked with me. Okay. So if some of the doubts are not yet resolved, you must have a list. You must have everything in your doubts. Say the whole syllabus must be a doubt for you. So I need to be in sync with that. If we don't clear our doubts, then of course no point in getting into the exam, because the chances are, you also know, we might not get the correct answer even after we know the concept. Write on the question. For me, it is not that easy as a student to quickly come to a conclusion if I'm not well revised with respect to concepts like this. Right now, your intent while taking this session, okay, so we all know we are sitting here to study. Your intent while taking this session should be to understand the logic, the connect, and store it in your long-term memory. I don't know how you do it. Whatever your strategy is, you have to do it. You think this is your final prep towards the examination. This session. Right on the question. And whoever who has done it in the past, please do not copy. Do not go back to your old notes. Take it as a new thing. Check your memory. Test your memory. If you can still recollect it or not. That would be a good thing for you. You can see the screen, right? Okay. So I've given you two hints. One of them is it is related to 1 by 60, right? The hint. And another hint that I have given you all is that you must have done it in the past. So you have two hints right now. So Bishoppriya, Chaitanya, Jyotsna, Muskan, Prerit, and Suchita, welcome. And I hope you can hear me well. Very good evening. Yes, sir. And very nice to see you all on time. And thank you for waiting for me. Couple of minutes.
Nobody will directly tell you to apply the 1 by 60 rule or the logic or the formula. The questions will not directly tell you to do it by yourself either. It becomes one of your weapons or strategies to come up with solutions to numericals. Okay, it is something that has multiple applications. It is not one topic, but it is connected to a lot of topics. You can connect it with instrument flying. You can connect it with radio navigation. You can connect it with compass headings, compass bearings. Think about it. What I'm requiring right now, because this probably is the last session discussing 1 by 60 with respect towards the examination, other than the questions that you'd be coming across when you're practicing questions. I want you to ensure that you remember that, okay, I might be asked a question that there's a VOR, okay? With respect to the VOR, you would be somewhere. Now, what is the first bearing or the first reference that you get from a VOR? The first reference that you get from a VOR is a radial. What is radial? Radial is the magnetic bearing from the ground station. When I say magnetic bearing from the ground station, you see the emphasis from. It's not like it's a special word. But then why do I have this emphasis? I have this emphasis because to and from are the only two magnetic references that we can measure from reference magnetic north. All ground stations, all radio ground stations are aligned with magnetic north. Okay. All ground stations are aligned with magnetic north. So Chaitanya has also joined us. Chaitanya, welcome. I hope you can hear me on a scale of 5. Running late. You missed out on all the introduction and not just introduction, but introduction to the topic. Chaitanya, why don't you try to just give brief to Chaitanya who's just joined. मुझे भी पता चल जाएगा आपको ब्रीफ अच्छे से मिलेगी नहीं एंड चैतन्य को भी ब्रीफ मिल जाएगी. Charlie Hotel Alpha to Yes, sir. yeah, Charlie Hotel Alpha to Charlie Bravo Alpha. Yeah. So, sir, just give the introduction regarding the 1 and 60 rule, and this would be the last lecture regarding this in point of Last view. lecture वाली बात तो last में बताओ ना. Don't start with last lecture. He'll get scared. Okay, start Sir, us with regarding the examination. beginning things. Yeah. Carry on. Sir is giving a question right now. We have to solve it, which is regarding 1 by 60 rule. What else? Important चीजें नहीं बोल रहे आप. ये तो basic instructions है. Can someone relay? That's what I can recall, sir. And Why? और भी 2 चीजें बोली ना important. Related to what you have said. Think. Chaitanya, think. Mic is open. Anyone else? Finish the relay. प्रेरित तुम बताओ. Yes, sir. Sir, to Victor Tango, Charlie Bravo Alpha. जो पार्ट चैतन्य ने मिस किए वो पार्ट बता दो चलेगा फटाफट. So, sir is giving a question to us. We have to solve it. The key point and the hint of that question is it is related to 1 by 60 rule. And that question we have done in past, but we don't have to see from our notes. We have to just solve throughout our memory. Okay, what else? I did say something about 1 by 60. Come on, Prerit, think about it. Muskan? See, student. Yes, sir. See if you can add couple of points. Yes, sir.
So Chaitanya sir also told about the magnetic direction to the station. These are called radials, and magnetic direction from the station. These are called QDM. Also regarding 1 by 60, that it has wide applications in solving the numericals. That's it. This is the point I'm talking about. Very well, Muskan. Students, if you can recollect a couple of more points, it's a milda julta bola, but this is what I was talking about. It has wide applications. You will not be directly asked in the exam to apply this rule. The question in the exam could be something else altogether, not resembling in words with respect to 1 by 60. 1 by 60 has wide applications. It is not a topic, but it is a part of a lot of topics. It should be like your weapon, right? Or it should be something like an asset. I can guarantee in the exam it would have an application of about 15 to 20 different scenarios. You might not even realize it. It is a big thing. I want you all to understanding to be like that. This probably could be the last set of lectures with respect to this concept, beginning of exam prep sessions. But you see, it has so many wide applications. It has an application with respect to the glide slope, glide path, safe heights, and then rate of descent, whether you are over a glide slope, below a glide slope. It has applications with respect to track, error, angle, total correction angle also that we have not yet solved in these series of lectures. That is in-flight navigation. And then it is related to your radio nav also, your VOR, CDI, RMI, HSI, all these 3-4 different indicators, different variants of similar or the same navigation system. Now you see, read this question. You are flying along an airway to a VOR DME. Now VOR DME, VOR DME, ground stations are co-located. The antennas are together. So VOR gives me these radials that come out. VOR. And DME gives me range in nautical miles. The range with respect to a ground station VOR, okay, is measured like this. The aircraft is here. The slant range. Okay. But that is enough for our understanding with respect to the physical distance being the same range. For us, if this airspace gives me 100 nautical miles with respect to the CTA, we could say, okay, this here, then my aircraft is said to be 100 nautical miles, that is DME, if it is tuned to the DME. And the tuning is automatic with respect to VOR. VOR tuning you have to do as in frequency selection. You have to actually select the frequency and operate your VOR on board the aircraft. The sensors that will sense the signal sent by the ground stations. Which signals will the sense depends upon the frequency you tune to the VOR. You will only sense the signals you want. You want the signals from your destination if your destination is within the maximum range of VOR. So what is the maximum range of VOR? VOR stands for very high frequency omnidirectional ranging. VHF range formula will give me VHF based VOR maximum range formula. Let's say I'm doing a short flight within 200 nautical miles, Mumbai to Pune. It's possible that I am traveling within 100 to 200 nautical miles. If I'm tuning into the VOR, flying from Mumbai to Pune, if I'm tuning into the VOR of Pune Aerodrome, if it has a VOR, then I need the particular frequencies. If I get the frequency, I'll tune my system. The moment I tune my system, I'll start receiving signals on my aircraft VOR systems, on board whatever systems I'm carrying. I should be able to read the instruments and make sense of what those signals are. And how do I use that signal to fly?
So what is that signal that I get? With respect to your navigation exam, CPL studies, this is all that you see. This is a top view then. And if this is the top view, then we understand we're talking about Earth like this. On Earth, there's a magnified VOR and it is aligned with magnetic north. Because that's where my magnetic north is. This North Pole. Like this. But for you, when you're flying, it's a horizontal thing. So for you, when you're standing or when you're on board the aircraft, for me also, for any pilot, right now, okay, I am seated here. So for me, north would be somewhere in the horizontal plane. It will not be top. That is not north, that is up. North is behind me with respect to my area where I am right now, wherever I am, my location. That is north exactly, that is east, south, west. So like this for me. So my VOR station is tuned that it will send signals in all 360 directions. If I am in the center of the VOR, then the signal coming to you is coming at 180 magnetic. So you all are, with respect to the computer screens right now, if we assume that you're seated on a desk, on a chair that is on the other side of the desk where I am right now, then you will be on my radial if I'm in the center of the VOR because I'm aligned with magnetic north. And this is all clockwise. So these are the key elements to understand any numerical with respect to radio nav systems also. Right now, we are relating with radio nav systems. One of the most important formulas that will help you in more than 50% of your VOR DME sum numericals. But some students don't really feel like taking the effort to connect what really helps you solve that to there. Student, that is the way to do it. In the exam, you should click in your mind that, okay, this is how I'm supposed to do it. And it's a very easy thing for me to do. So if I'm within 100 DME, how do I know I'm getting that DME distance? I'm getting that DME distance if I'm tuned to that DME. With my VOR tuning, if I have to go to Pune, I'll tune to the Pune station and I'll get signals. The signals that I'll get will not just be direction based with respect to VOR, they will also give me indication with respect to the DME measurements. Whatever the DME is measuring in that. So now I get range, I get a directional reference. This directional reference is called as QDR, going out from a station. This QDR is not as important as QDM. What is QDM? QDM is opposite of QDR, like this. This is QDM. Now, wherever the arrow goes, you look at the arrow and see, where is the QDM arrow going? Is it going 0900? Is it going 270? Or is it going 000? Tell me. Where do you think the QDM arrow is headed? You can give me answers verbally also. Bolo, bolo. Sir, 270 Victor Tango Papa Romeo Tango. 270, correct. That is QDM. This is the first level of understanding we need to have. Now look at the QDR, where I've written QDR, and tell me. What is the directional heading of QDR? Charlie Hotel Alpha. Victor Tango. 090. Yes, Vishnupriya, correct. Jyotsna, 3 digits, 0980. Correct. The VOR will sense me QD, will sense QDR, but QDM can be derived. Okay. Easy to derive. Now, looking at the instrument, you will be able to derive what is QDR, what is QDM. If you know what is QDR, the opposite is QDM. If you know what is QDM, the opposite is QDR. So if you are saying the QDM was 270 magnetic, and if you're saying QDR was 0980 magnetic, what is the difference between the two? The difference between the two is 180 degrees. And
It is a reciprocal of each other, QDM, QDR. With respect to this question, we have been given a QDM of 271. And we also know this is 270. Where exactly with respect to this VOR can you track 271? I want you all to track it in your notes and share a picture over WhatsApp with me right now. Whenever I say share pictures, make it automatic on WhatsApp. Okay, I don't want to say that. It just makes the transmission lengthy. If you can figure this out, 271, where would it be with respect to this particular VOR? Then you are good to make any type of radio navigation based question. It's that important to figure this orientation out. The factor is very easy. You make QDR that is relevant to QDM, and that QDR in the opposite direction will become your QDM. So if I use that technique, what is the reciprocal of 271? Remember, whenever you have to find reciprocal, you always add and then subtract by 360 if the values are more. Or you can simply subtract also. But sometimes it will give you an incorrect answer. So 271 plus 180 minus 360. 037. I get 091. 091 students. Whoever is not following, please talk to me. If you're confused, if I'm too fast, let me know. I want to plot 271. I don't know how to plot QDM, but I know how to plot QDR. It is very easy, clockwise from north. So in order to plot QDM, find QDR, easy to plot, make a QDR, and that is the QDM in the opposite direction. So what is the reciprocal of 271? How to find reciprocal, students? 271 plus 180. You want a reciprocal. You add. Whenever the answer is more than 360, I don't think you can see, you subtract 360. Here I'm getting 451. So I deduct 360 and I get 091. This is the best way to get 100% accuracy in reciprocals. Please follow this method, okay? When I say you have to follow this method, you have to follow this method. All right? Because you want to make it easy for you, right? So 091, where is QDR 091? This is 090. So this slightly here is 091. Over exaggerated a little bit to show the angle right now. Of course, it looks like 100. So this is my QDR 091. So automatic, if my aircraft is flying anywhere in this direction, it is on a QDM 271. But it is somewhere here only. It depends upon the range. Where is my aircraft? I need to know the range now. Range, luckily, is directly given by the instrument, that is DME indicator. DME indicators are very simple to read out. They are just merged with all other information. This DME range, if given to you, let's say 100 nautical miles, then you plot your diagram, and I'll make the aircraft in yellow here. You just say that, okay, my aircraft is here. Okay, the bigger wing ahead. And this distance right now is 100 nautical miles. So you have your distance, that is 100, and you know now where your aircraft is. Now, if I tell you the airway, they are telling us in the question, the airway QDM is 271, RMI indication QDM to VOR Quebec is 266. So the airway QDM, so there is an airway, we follow radials. So the airway QDM is 271. So my aircraft right now that I've plotted is on the airway. In the question, let's read the question now. You are flying along an airway to VOR by the letter key, Quebec. The airway QDM is 271. So what we have plotted is the airway QDM.
And if the aircraft is on that, it means the aircraft is on track. RMI indication QDM to VOR Quebec. See, you have to group words together. Otherwise, the sentence will be not that easy to be understood. QDM to VOR. It's opposite of QDR. Simple. My RMI indication as 266 means, what is RMI? Radio magnetic indicator. One of the most, the first of the RMI radio navigation indicators for VOR, I could say. I won't say primitive, it is still used. But right now, for the jets that you are planning to fly, you have those HSIs or CDIs, like not even CDIs, you have HSIs. They're a combination of all these instruments. So when they say the RMI indication is this, it means my aircraft is at 266. My aircraft is not on track. So now can you plot where is 266 QDM? Send me those pictures. I mean, show me the diagrams while I check your other diagrams. Chaitanya, do you have a question? Please go ahead, ask. Do you have a question about the diagram? Suchita, your QDM is incorrect. You're not listening. Jyotsna, perfect. पहले आपने कुछ गलत किया था, but अभी सही है. Next करो. Who can show me 266 QDM? Simple, उसका QDR निकालो, QDR बनाओ, वहां पे ही है QDM. बस डायरेक्शन ऑपोजिट है. ये समझ नहीं आ रहा है तो बोलो, मैं आपको बार बार हर क्लास में समझाऊंगा. ऐसे नहीं आपको सिर्फ रटना है. दिस द बेस्ट वे टू डू इट. एंड व्हाट आई एम शोइंग यू इज लाइक थिंकिंग एंड डूइंग. आई होप तुम बस ऐसे मग करने की कोशिश नहीं कर रहे हो. आई होप यू आर नॉट जस्ट मगिंग दिस अप. प्रेरित, तुम भी सुन नहीं रहे हो, खुद का ही कुछ कर रहे हो. QDR तो ठीक है. QDM 271 कहाँ लिखा है आपने? नंबर्स गलत जगह लिखे हैं और डायग्राम की फोटो पूरी नहीं आई मेरे पास. पूरी आई है, गलत है. QDM 09 और 1 जहाँ लिखा है वो गलत है. वो QDR है 09 और 1. QDM क्या है? QDM का वैल्यू वहां आना चाहिए. आपने गलत लिखा है, मतलब आपने आधा समझा नहीं है ये चीज. चलो फोकस करो एंड मुझसे क्वेश्चंस पूछो. कम ऑन कम ऑन. चैतन्य, क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, एक्नॉलेज तो करो कम से कम. हाँ या ना, वेट करो मैं. वेरी नाइस. सो ज्योत्सना, वेरी गुड, वेरी नाइस. So Jyotna, plot your aircraft on, read the question and plot whether the aircraft is on 271 or the aircraft is on 266. और जहाँ 09 और 0 लिखा है वहाँ QDR लिख दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है. वैसे तो नहीं होगी, जिसको पता है उसको पता है, कंफ्यूजन नहीं होगी. वेरी गुड, वेरी नाइस. विष्णुप्रिया, पहले तो QDR सही करने हैं हमें. QDR इज क्लॉकवाइज फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ. आपका 086 करेक्ट नहीं है, आपका 266 भी करेक्ट नहीं है. Students, I'll show you the basis of directions once again. Everyone, if this is my north, no matter I see it from sky or I see it white, my angular measurements of directions are always clockwise, like this, clockwise. Okay, so if I say 09 or 0 is the first right angle triangle. So this is 09 or 0 and that is east, right? So my 080 cannot be anywhere here. It cannot be. This line here itself becomes a clockwise 180. Come on, that is south. Vishnupriya, correct a diagram.
So students, if I say 266, reciprocal of 266, using scientific calci, you do this calculation to get QDR because 266 is my QDM. Okay. I get 446. Anything above 360, I'm going to deduct. And I get 086. So for 266 magnetic, where my RMI is showing, my RMI will show me my aircraft position. So if my RMI is showing me, or whatever nav instrument is showing me that I am at 266 QDM, I need to know where am I with respect to my airway, with respect to the ground station. I need to know. I need to be well oriented with my space. So I'm showing you how to do it. I hope you're learning. It's not a it's something that is very useful, not just in exams. Only 3-4 students have submitted the diagrams. Not everyone has done it. I'm not getting it. I don't understand why everybody has to be acting differently. तो टाइम लग रहा है तो ठीक है, करो अच्छे से. कोई डाउट है तो मुझसे पूछो. मुस्कान, वेरी गुड. चार्ली होटल अल्फा, आप भी सुन नहीं रहे हो. मैं कहाँ क्यूडियम बना रहा हूँ, आप कहाँ क्यूडियम बना रहे हो. बिना क्यूडीआर के क्यूडियम बना रहे हो. पहले क्यूडीआर बनाओ. दिस इज इनकरेक्ट. लेट्स फिक्स दिस. लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. Yes, sir. And what about Charlie Bravo Alpha? Come on, quick, yeah. Inbound, yes. 086 is QDR. It's not inbound. QDR is always outbound. QDM is inbound. चलो चलो, जिसका गलत है फटाफट करो, नहीं तो रह जाएगी ये चीज. ना फिर एग्जाम में 50 के ऊपर आएंगे नहीं आपको. So can you tell my mistake once again? अबे गलत है क्या मिस्टेक. QDR बनाओ 271 का एंड QDR बनाओ 266 का. QDR बनाना यहाँ पे सिखाया है. ये डायरेक्शन मिल गया. ये डायरेक्शन को क्लॉकवाइज यहाँ पे प्लॉट करो. वो हो गया QDR. उसका डायरेक्शन जो ऑपोजिट है वो हो गया QDM. लो 10 सेकंड में समझा दिया अभी मैं. करो ना स्टूडेंट्स यार, क्या कर रहे हो आप लोग. चैतन्य समझ आ गया. Yes, sir. तो चैतन्य करते क्या हो तुम. एक बार में क्यों नहीं समझ में आता है तुम्हें. और पूछते भी नहीं हो खुद से. मैं 10 बार तुम्हारा नाम लेता हूँ तब तुम मुझे बताते हो सर नहीं आ रहा है मुझे, मैं बताओ मेरे को क्या प्रॉब्लम है. इश्यू क्या है. खुद से नहीं बोल सकते नहीं आ रहा तो. 10 बार अगर मैं नहीं पूछूंगा तो नहीं बताओगे. हर किसी को थोड़ी पूछता हूँ 10 बार. इसका मतलब उनके भी डाउट्स रह जा रहे हैं क्या. अच्छे से पूछ लो ना फटाफट नहीं आ रहा तो. I'm nudging you all to tell me your doubts. Then you are telling me that you have a major doubt. ऐसे तो आधा घंटा तुम्हारे एक डाउट क्लियर करने में चला जाएगा. जो भी मेरे को पड़ी है तुम्हें नहीं पड़ी है उस चीज की. फिर ऐसा तो है नहीं ना. फोकस करो. क्या तुमने बोला वीडियो ऑन करोगे. फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास. एक ही इश्यू बार बार रिपीट हो रहा है. फिर आगे पढ़ने का मतलब क्या है. मेरे बोलने से दिमाग में नहीं जाने वाला है. करो, मेरे को आंसर भेजो जल्दी. चार्ली ब्रावो अल्फा, तुम्हें क्या इनविटेशन चाहिए क्या. और मेरे से बात करो ना. कोई कंफ्यूजन है तो अभी. क्या माइक्रोफोन सबने बंद कर रखे हैं क्या. आई विल श्योरली डू इट फॉर यू ऑल. जो भी कंफ्यूजन है. बट आपको समझा रहे हैं तब आप फिर समझ नहीं रहे हो तो आगे क्यों बढ़ रहे हो. वो भी मैं ही करूँ क्या. कैसे पढ़ते हैं वो भी मैं ही करूँ क्या. आप लोग के लिए पढ़ाऊँ भी मैं ही और पढ़ूँ भी मैं ही. एग्जाम एग्जाम सेशन चल रहे हैं यार. QDR तो सही है चैतन्य. QDM हटाओ ना, वो गलत है QDM.
गलत था तो गलत रहेगा ही वो QDM, वो वहां रहने से सही नहीं हो जाएगा। QDR सही है, उसके बाद मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया, इतनी बार से क्या बोल रहा हूँ मैं? जो QDR है जहाँ है वहीं आपका QDM हो जाता है। जहां से QDR निकाला है वही QDM QDR पे हो रहा है आपका। वो पॉइंट क्यों नहीं समझ में आ रहा आप लोग Yes, को? sir, to and from. हाँ तो लिखो ना, उस पे दिखाओ ना कहाँ पे है। वेरी गुड, यू आर गेटिंग इट, वेरी नाइस। चलो चलो, विष्णुप्रिया, व्हाट्स द कंफ्यूजन? So I got these things. This is my QDM 271 and 086. This is 086 here, QDR. So this I can write on my RT charts. I write this here, radial 086, outbound, coming out from the ground station. Anywhere my RMI is showing me 266 QDM, it means my aircraft is somewhere here, like this. Now, it's not compulsory that my aircraft is headed in that direction. Sometimes a heading could be different while your QDM still could be what it is. Because that's what the instrument is sensing. Instrument will just sense the radiation coming from the ground stations and it will show you that value. So you'll always have to match your heading with your QDM when you're flying to the station. From the station, what is from the station? This red aircraft is from the station. Yellow aircraft is to the station. They both are on the same airway. The ATS route, the ATS route, they're on the same route. But just because they are flying in different directions, the red aircraft is said to be on a radial because that's the signal being radiated. Radial, radiation, that's where the word comes from, students. The radiation goes out in 360 directions, the theory of VOR. Wherever the phase difference is, how do you think we get these signals? The variable signal and the reference signal. There are two signals coming out from your VOR ground station. The difference between the two at every given point measures the bearing of the aircraft with respect to that station. If the variable signal and the reference signal are on top of each other, we are saying they are in phase. Okay, they are in phase, means zero. So if my blue aircraft is here, flying in a direction west, but the aircraft is here, then if it is tuned to this particular VOR, this aircraft VOR station will get two signals, variable and reference, in phase. And in phase means there is no phase difference between these two signals. So it is 0, 0, 0 degrees. So we get the aircraft radial as north, 0, 0, 0 degrees. This is how the radio senses our position, the radio navigation system, that is VOR. Now, when my aircraft, let's say another blue aircraft is here, flying on a heading south, but in the vicinity of this VOR, it will use this VOR for navigation. Why not? So at what radial is this aircraft right now with respect to this VOR? So the radial is this. I'll see wherever the CG is. Generally, the CG will matter for me. So this is the radial. What is this radial? With respect to the same diagram, it looks like this radial is between 0900 and 0901 only, because we have taken 0901 as this green line. But whatever the case is, that will be the radial. Now, if this aircraft, blue aircraft, wants to fly to the station, then it needs a QDM. And QDM definition is magnetic track to the station. So QDM is you fly that track, and that will be true. It will be exactly opposite to the QDR right now.
So what we need to understand is QDM is a direction to fly, while QDR is a bearing from the station. There is a difference which nobody talks about. And the confusions that a few students are having that you're plotting QDM directly opposite is because of this. Are you following? So QDM is a direction to fly, not your bearing, but QDR is always the bearing, and bearing is measured clockwise like that. So here, the phase difference between the reference signal and the variable signal is such that there is a 90-degree phase difference between each other. And this 90 degree is sensed by the VOR system, and it gives you a radial 0900. Now there's another aircraft, green, flying east. Now, what is the radial of this aircraft with respect to this ground station? Radial is from the north. This is the radial. Take this track, is the radial. We know it's radial 180. But how is the system sensing radial 180? Again, the fixed signal, that is the reference signal, and the variable signal. There'll be a huge difference between them, 180-degree difference between them, the phase difference. And because the two signals have a 180-degree phase difference, the aircraft sensor will sense 180-degree from the station. Here, if you need a QDM to fly, what will be your QDM? It will be opposite to your QDR. Why? Because in order to fly to the station, the aircraft has to turn 90 degrees, align like this, on track, and then fly. And what will be that direction? That direction will be 0, 0, 0 north. Isn't that 0, 0 a reciprocal of the radial QDM? So that becomes a QDM. Right now, the QDM that I need is 0, 0, 0, while my QDR in this case is radial 180, while my aircraft heading in this case is 0900, something else altogether. So my heading could be different, my radial is different. Opposite to radial is my QDM. It is a direction that I'll need to fly to the station. You cannot be in 3 different positions at the same time. You cannot be in 2 positions at the same time. So how can your QDR and QDM can be in 2 different spaces when they both are the same things, just directions are different? It's a very simple thing to understand if you use your mind and if you focus. If you are like, okay, my hands are open, put knowledge in my hands, not all concepts are that simple to understand. But this is simple, but it requires focus. You think everything that requires focus is tough? Is that what you think tough means? Difficult means requiring more focus? Then you are wrong. चलो करो फटाफट, सब कुछ बता दिया आपको. अभी आप कोई भी टेक्स्ट बुक से व्यवहार पढ़ लो, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है. मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं. So the question in concern is, my aircraft is on a QDM with respect to VOR Q1266. My airway, this is my required track. My airway is 271 and my aircraft is on this. It means it is my TMG, track made good. It can be considered as that, track made good. And airway is required track. What is that? If again, this is my VOR, same thing. This is my required track. Okay. And this is my TMG right now. Your aircraft is here, while your aircraft should be here. This is what I figured out in the question. Is my question complete? Let's go back to the question. Let's write down the question again. You are flying along an airway to a VOR DME, which are co-located. DME will give me range. Coded as Quebec. Generally, there will be three-digit letters.
The airway that you're supposed to be is on 271. Airway that you're taking to fly to the station. But your aircraft indication is 266. Okay. So continuing this question. Range of aircraft is 48 nautical miles. Here you can say DME. It could be a DME reading. Calculate how many nautical miles off track are you and whether on right or left of airway. So this is where the question is completed. But it's very important that we know what is QDR, QDM, how to plot it. No matter how many times you have to ask, please ask. Don't be quiet and keep giving me wrong answers or zero answers. The question says you have your DME reading, you have your RMI working, your required DME, your required track requires a QDM of 271 while you are having a QDM of, so then they're saying your required track has a QDM of 271. That is where the question gets difficult. You're like, track ka QDM 27. I thought track is just radial. It was so easy. Yeah, track is radial. If it's QDM, the opposite is your radial. That is good. You're thinking in the right direction. So now here I see, I am not sure how many nautical miles, but I know in terms of degrees, how many degrees off track am I? Who can tell me? How many degrees off track am I from this airway right now? Simple question. 5. Chaitanya is saying 5 degrees. Anyone else with your answers? Prerit? Yes, Chaitanya? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही चैतन्य. सेकेंड डे थर्ड डे आपका माइक्रोफोन इश्यू फिक्स नहीं हुआ है. 005. 005. वेरी गुड. आ गई आवाज. सुचिता, मुस्कान, ज्योत्सना, प्रेरित, विश्वप्रिया. 5 degrees. Yes. 5 degrees मेरे को मिल गया है that I am off my airway center line. Who can tell me what is the width of an airway? In how many nautical miles is the width of an airway? Entire airway. Width of the airway. Come on, Chaitanya. बोला है ये सब मैंने आप लोग को Sir. पिछले क्लास में भी बोला है. Yes, प्रेरित. Sir, 10 nautical miles. Yes, 10 nautical miles. Yes, Muskan. Sir, 10 nautical miles. 10 nautical miles. Very good. 10 or 10 nautical miles, as you say it in RT. So on either side of the airway center line, you get a width of 5 nautical miles, 5 nautical miles. If my airway QDM is 271, it means 271 is the center. And then on 271, 5 nautical miles on the right and 5 nautical miles on the left, I get. Okay. If I am within 5 nautical miles right and left, I am on track. I am not off track. Although I'm off the airway center line. Two different things. You can say if you don't come back on center, you might get drifted. So it's always good to come back on the airway center line. There is a very easy technique to come on airway center line, and that is your course deviation indicator. That bar actually shows you where the airway center line is. On the instrument up to 10 degrees, it shows you. 10 degree right, 10 degree left. Every dot is for 2 degrees. That is also a place where you can determine. So right now, if this question was there in that instrument, you would have seen that the bar on your VOR would have been in a place that would have shown you 5 degrees. So it would have been halfway through. Because your RMI reading is 266 and required RMI reading or required track is 271. And it is left or right with respect to diagram, we know it is left. So the same thing, your VOR indicator, and this is also one dot only, like this. So it shows you one white bar like this. This bar is your airway.
Think about it like that. Wherever the airway is, you fly towards the airway will come in the center. It means you are reaching the airway. I have to be like this whenever I want to maintain my airway center line. This one is not exactly in the center, but this is the center now, okay? If my airway is in a position where the green is, then it means I'm 2 degrees. The airway is 2 degrees on the left. It means I am on the right. So that's how I disorient myself or orient myself. Disorientation is very easy in these cases then. Okay, my CDI needle is there, it means I am on the left. No. The airway is on the left. You are on the right. 2 degrees. 4 degrees, it will be in the position where the blue bar is. 6 degrees, it will be position the red bar is. There's just one bar, okay? It just changes its position. This is 8 degrees. And again, green, 10 degrees. If you are more than 10 degrees off track, then it will be in the extreme corner only. So you keep turning, it will be in the extreme corner. It will mean that the required setting that you have set. By setting, I mean one more thing, students. Your instruments are so easy. Your instruments are so good that you can actually set the desired course on the instrument. And that course is what the instrument tries to maintain as per this needle or through this needle is what I'm trying to say. So this needle, if I say my required is 271, okay, then if I'm on 271, then my needle should be in the center. If I am on 266, then where will my needle be? Such are the questions in the exam. You think आपका हुआ नहीं है सब पढ़ा के सब पढ़ा चुके आपको अभी स्पून फीडिंग चल रहा है but this is good because your base is strong so you deserve this. But if you don't remember it from here on, then that is the problem. What did I just say? I said the importance of it. Before that, what did I just say? Do you recollect? Are you writing it down? Are you working hard to make sure that you remember this for the rest of your life? उतना आप टारगेट से चलोगे तो शायद एग्जाम तक याद रहेगा. That is the buffer I'm keeping. Okay. So that is what is happening there also. That is also what is happening there also. Now let's come back to this question. How many nautical miles off track? So my situation is such, I have to find whether I'm right or left and how many nautical miles. Only if I could see this on my CDI. If I could see this on my CDI, we call this CDI right now, then my CDI would have shown me this. And looking at the CDI, if I know how to read the CDI, which I've shown you right now, then you would say, students, if I'm doing something wrong out of silly mistake, let me know. Okay, I'll correct myself if you think like that. But talk to me. That is very important. अभी भी कोई बात नहीं कर रहा है. Worried navigation में कोई बात नहीं कर रहा. So 2 degrees, 4 degrees, 6 degrees, this. Here. Your white bar will be here. I'm making it black right now. अगर आपको ये दिखा दिया ना, if they ask you where is the aircraft and how many nautical miles, you will say 2 plus 2 plus half, 5 degrees. And where is the aircraft? Right. This is where the aircraft is right now, in the center. This is what we assume. This nobody teaches you with VOR. Nobody will ever say this. Okay, यहाँ पे आपकी aircraft होती है VOR में. Nobody talks about it. It's not mentioned anywhere in any of the books, languages whatsoever. But as an assumption, that's where your aircraft is. But that's not how the instrument is designed. So they will never teach that to you. But the logic can be learned, right? ये सब सीक्रेट्स बताने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो पता नहीं आपको क्या चाहिए फिर लाइफ में. जो चाहिए पहले वो ढूंढ लो या मेरे को बता दो, फिर पढ़ाई करो. Navigation, you have to buck up, okay? You cannot just play it like, मेरे को चाहिए, मेरे को मिल नहीं रहा है. Like, that is really not good.
मैं क्या कर पा रहा हूँ क्या नहीं कर पा रहा हूँ उस पर फोकस होना चाहिए बस। क्या करने बोला है नहीं बोला है, वो करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, अपने आप रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। फाइनल थिंग इज वेदर आई एम गेटिंग इट और नॉट, बट आई डोंट हैव दिस नो ऑप्शन ऑफ CDI display. How to solve? Yes, Muskan, tell me. No, sir, it was by mistake. Okay. Jyotsna, Suchita, Vishnupriya, are you following? Prerit, Chaitanya. Following, sir. Chaitanya, टेंशन है तुम्हारा, मेरे को इनको पता नहीं है फॉलोइंग और नॉट। क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे ऑफ कोर्स, बट प्लीज बी केयरफुल एंड हाँ, कर रहा हूँ चेक कर रहा हूँ। So how to solve this? चैतन्य बहुत अच्छा किया है अभी, गुड। थोड़ा ओवर एग्जैजरेटेड अपना 086 एंड 266, करेक्ट। रियलिस्टिक नहीं है इतना तो श्योर है ना, नहीं तो वो भी एक कंफ्यूजन रह जाएगी हमेशा, आपको लगेगा कि यार सर जा तो 045 रहा है, आपने 086 क्यों बोल रखा है। एक्यूरेटली बना के दिखाओ मुझे, भले आपके पास वो 90 डिग्री वाला डी नहीं है, फिर भी एक क्लोज टू एक्यूरेट बना के भेजो सेम, ठीक है। 277 भी चाहिए उसमें मुझे, सॉरी 271। So students, what I'm plotting right now, I'm expecting you all can also plot. Radial Chaitanya तुम्हारा भी सही है, and I'm talking to, of course, second Chaitanya is that Chaitanya Bravo Alpha only, तो समझ गए होगे आप लोग। तो तुम्हारी बात करो Chaitanya Bravo, Charlie Bravo Alpha। 086 रेडियल सही है, उस पे QDM भी मेंशन करो मुझे। आई वांट टू सी इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट QDM कहाँ पे है। 0860 QDM 266 का है राइट, तो 271 भी बनाओ टू QDM, पूरा करो। अच्छा कर रहे हो आप, सही जा रहे हो, वेरी गुड। Sir, QDM 266 है. सॉरी, The QDM is 266 and QDR 086. या so how to solve this? So with respect to my plotting, I've realized that this is 271, this is 266, and the difference is 5 degrees. Okay. I know for one thing that my range is 42 nautical miles. That is given to me from my DME. Okay, 42 nautical miles. So it means I can plot my aircraft anywhere on my page and name that distance as 42 nautical miles. So that's where my aircraft is. This is where my airway is. So I already know I am on right. Because with respect to this airway, this is right and this is left. So I am on right. How many nautical miles? Degrees are there, range is there. What I don't have this distance. What do I see when I see this? I see 1 by 60. If I don't see that, then I have to train my mind to see it. I don't have any other option. Yes, Muskan, what's on your mind? Sir, in question you have given 48 nautical miles. So 48 nautical miles. Yes, 48. अच्छा, calculate नहीं किया. Thank you. 48, yes. The one that is the question only. So Chita and Pradita is also texting. Jyotsna is also texting. Yes. हाँ वही 48. तो आप लोग सोचोगे सर ये 6 नॉटिकल माइल कहाँ चला गया, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये तो बताओ। और पता चला ये डाउट है और पूरे एविएशन सर्कल में घूम रहा है ये डाउट। पता चला डाउट नहीं है, तो क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया हमने, और पता चला वो पेपर एग्जाम में आ गया। तो चलो गुड। सो हु कैन सॉल्व दिस नाउ, गिव मी योर आंसर। सब कुछ तो मिल गया अभी। सो यू नीड टू फाइंड दिस, ओके, you need to find this distance of how many nautical miles of the airway center line.
right or left? So Jyotsna and Suchita are the first ones to give me the answer. Very good. Right of the airway center line. Okay, not of track also. Now we'll say airway center line with respect to this. Very good. बट प्रॉब्लम क्या है? फॉर्मूला सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन समझने में हमें प्रॉब्लम है, या क्वेश्चन को अच्छे से प्लॉट करना है and फिर पता करना कि यार ये तो बहुत इजी था मेरे लिए. सॉरी. तो मुस्कान, वेरी गुड. वेरी गुड. चार्ली ब्रावो अल्फा. विष्णुप्रिया. विष्णुप्रिया, कंफ्यूजन है तो पूछो, क्या कंफ्यूजन है मेरे को बताओ और सॉल्व. अगर अभी भी क्यूडीआर क्यूडीएम नहीं समझ में आ रहा है, विल बी डूइंग वन मोर एग्जांपल, तब ध्यान दो उस पर. जितने आंसर नहीं आ रहा है, आप साइंटिफिक कैलसी यूज नहीं कर रहे हो, करो फास्ट फास्ट आंसर दो. आप लोग को मैंने बताया टाइमर सेट करना है 90 मिनट्स का, 90 सेकेंड्स का. एक ही कॉन्सेप्ट पे सेशन खत्म हो जाएगा. दो पे करना है, एक पे नहीं. अच्छा कर रहे हो, बट ठीक है यार, अभी कितना टाइम और. तो whatever I have, theta is equal to opposite upon adjacent into 60. ये best है formula, students. It comes to you. So theta is 5 degrees is equal to opposite. ही तो ढूंढना है मुझे कि angle का opposite. That's why people study trigonometry so much, students, because if you can resolve something in a triangle, trigonometry can give you a automated answer. And most of the things can be resolved into triangle. GPS positions also. इसीलिए तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी डीप है ना, बिकॉज नेचर में थिंग्स ही इतने कोनिकल है कि ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. सो इट्स कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल लॉ. तो जो भी थियरम्स लॉज आप पढ़ते हो, वो कहीं ना कहीं नेचर के स्ट्रक्चर से डिराइव होते हैं. वो दोबारा से आपको नेचर का स्ट्रक्चर ही पढ़ा रहे होते हैं, बट जस्ट द लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट. आई मीन दैट्स द ओनली डिफरेंस. बिकॉज वो समझना मुश्किल है ना, तो समझाना भी मुश्किल हो जाता है. I think this perception that I've shared is very rare. I don't think anybody talks about things in this light. Uh, I want to write this and want people to listen to this. It can really make our learning easier. वो कनेक्ट ही नहीं होता ना स्टडीज में एंड एप्लीकेशन में. वो कनेक्ट की वजह से हमारी पढ़ाई रह जाती है इतनी मेहनत करने के बाद भी. लाइक एज अ स्टूडेंट बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज आई हेटेड मैथ. Why are people hating math? Why half of the majority of aviators are heard saying, "Oh, I don't like math"? Because aviator generally the most practical of all people, right? So yeah, something to think about. Or my adjacent becomes my range. One of them is fine. Remember, as long as the angle is below 20 degrees, the law is perfect for you. Whether you have perpendicular distances or not, it doesn't matter to us in such applications. Into 60. So 48 into 5 upon 60 is equal to whatever my distance of track is. I get 4 nautical miles. Right. अभी यही चीज मैंने आपको चलते चलते मजाक मजाक में सीडीआई सिखा दिया है. फिर बोलना मत आपको सीडीआई नहीं सिखाया किसी ने. स्पेशली टाइटल सीडीआई, 3 घंटे की क्लास सीडीआई, वो सिर्फ दिमाग में है तुम्हारे. समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आई होप यू आर स्माइलिंग अबाउट दिस व्हेन आई एम सेइंग दैट. हमने दिमाग में बना रखा है ये चीजें इतनी डिफिकल्ट है. इतना नहीं है. आपके बेसिक्स आपको पढ़ाए हैं इतने अच्छे से कि चीजें आपको इजीली समझ जाएगी. आप अपने दिमाग को चांस दो रिलेट करने का. आपने ब्लॉक कर रखा है. नहीं नहीं, ये क्या होता है यार? ये नहीं होता है ना. फिर तो आपको हमेशा एक सपोर्टर चाहिए एग्जाम्स क्लियर करने के लिए. आपके साथ खुद से नहीं कर पाओगे. ध्यान रखना इन चीजों का. चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को. इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग. किसी को कोई डाउट है खुल के पूछो. ओके.
Here you are scoring 20 marks in the exam. कितनी बड़ी बात है यार, 50 से 20 70 पास हो जाओगे. Question number 2. Airway QDR, okay, is 1 1 0. RMI QDR is 103. Find if aircraft is on airway or not. If not, then how many nautical miles off and right or left? DME reading, write a note. DME reads or DME reading is 079er. So it's a nautical miles only, don't get confused. Now you do your solution. If you want to verify your diagram first before solving, share it with me, I'll check. You can say just check if my diagram is right before I draw it or before I solve it. Simple. But I'm happy that everyone is using the formula correct. Vishnupriya and Charlie Hotel Alpha. 4 nautical miles off track for question number 1 is correct. Congratulations. Right or left is missing from your question. See, this question doesn't have options, so you have to give proper answers. Second thing, you're not writing question number, students. पिछले क्लास में कितनी डांट पड़ी थी सबको, छोटी सी मिस्टेक कि आप अपने आंसर्स में क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे हो, आप भूल गए वापस से. मतलब इतनी छोटी चीज भूल गए तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट तो याद ही नहीं रहा होगा ना, फिर मैं तो अज्यूम कर सकता हूँ. तो फिर मैं आज क्या फिर से वही चीज पढ़ाऊँ आपको? तो एवरीडे हम वही चीज पढ़ें जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स? इज दैट हाउ विल अचीव सक्सेस? Something to think about, right? चलो फटाफट आंसर्स पूरे भेजो मुझे. विष्णुप्रिया, चैतन्य, प्लीज. यार बोल रहा हूँ फिर भी नहीं भेज रहे हो. क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो. चलो चलो. एनी डाउट्स? Easy, right? QDM, QDR. Question number 4, 4 nautical mile for right. Chaitanya, Roger, very good. Vishnupriya, question number 1, 4 nautical mile right. Very good. That's it. That's all it takes. chaitanya, एक सेकंड मुझे लगा -4 क्या है पता है. डांट देता मैं एक सेकंड, मेरे को लगता माइनस भेजा, बोलता है भाई एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हो, माइनस क्यों लिख रहे हो. बड़ा अंडरस्टूड, आपने टाइप करके भेजा ऐसा. गुड, नो प्रॉब्लम. तो एयरवे QDR दे आर टॉकिंग अबाउट. सिंपल. पहले वाला जो था वो थोड़ा एक स्टेप बढ़ रहा था, यहाँ पे सिंपल करना है. स्टूडेंट्स भेजो जल्दी आंसर, देखते हैं सही है गलत है. फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, फाइंड इफ एयरक्राफ्ट इज ऑन एयरवे और नॉट. ए का आंसर है यस, इट इज ऑन द एयरवे, तो बी आंसर करना ही नहीं है. इफ इट इज नॉट ऑन द एयरवे देन बी आंसर करना है. बी क्या है? इफ नॉट देन आंसर बी ऐसे लिख देता. ये हो गया B1 B2 ऐसा. तो अभी क्वेश्चन नंबर की वरी नहीं करना है, बट या एयरवेज ऑन एयरवे और नॉट बी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर.
ऑफ ट्रैक मतलब मैं समझ जाऊंगा एयरवे इज नॉट ऑन दी एयरक्राफ्ट इज नॉट ऑन दी एयरवे, सो इट्स अंडरस्टूड दैट वे। बट कभी भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें स्पेसिफिक आंसर भी देना ही नहीं, इट्स नॉट ऑन दी एयरवे, एक्चुअली इट्स राइट ऑफ ट्रैक एंड इट्स 9 nautical miles राइट ऑफ ट्रैक, और वॉट एवर द आंसर इज। ओके स्टूडेंट्स, so I make a ground station. Okay, I can simply make cardinal points also. I don't want whatever you want to make cardinal points. What is my QDR? 110 and 103. 110 is required and 103 is actual. So if I'll make one for my reference, or making cardinal points for my reference really helps me. Then 110 will be how much? This is 09 or 0. So this is 100, and I'll say this is 110 for me. So this is my QDR 110. Where is my QD R of my RMI 103? So I know that 09 is 0, 100, this is 100, this is 090, this is 100. This I can say is 095. I can say this equidistant is 105. So 103 is somewhere here. So 103. So this is my required airway center line. Gone. Unnecessary things are gone now. So 103 is where my aircraft is. And where was my 110? Yeah, I deleted that also, sorry. So this is where my airway is. This is where my aircraft is. QDR. Now we don't need to show where the aircraft is going because that is not asked. If it's QDR, then we can assume, if we have to assume that we are flying like this. Okay, students. If you have to assume, then this is what we'll assume. Otherwise, even if you don't have the heading, don't have the assumption, it's fine. Make this straight. Okay, I'll make this straight. Sorry. Oh, very accurate drawings. My range is given to me. That is how much? 70 something? 79 nautical miles. So now I know whatever I need, that this distance from here to here is 79. Okay. My aircraft was supposed to be here right now, but my aircraft is here. So how many? So I want to find this. This is my opposite. This is my 79 nautical miles. This is my adjacent. And this is my theta. What is my theta here? Theta is 103 and 110, the difference between the two, which is 7 degrees. So 7 degrees is equal to opposite into 60 upon adjacent, and is equal to, how much is adjacent? 79 into 7 divided by 60. I get 9.21 nautical miles right of airway center line as right of airway width is 5 nautical miles. Aircraft is off the airway as it is 9.21 nautical miles right. अब ये आंसर मैं ढूंढ रहा था, बस ऐसे प्रूव करना है ये क्यों एयरवे पे है, नहीं है ये। अगर मेरा ऑफ ट्रैक डिस्टेंस 5 nautical माइल से कम होता तो मैं एयरवे पे होता, तो मेरा आंसर ए भी सही होता, आंसर बी भी सही होता। तो दोनों ही निकालने हैं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है।
बट इनिशियली जब हमने क्वेश्चन देखा हमें लगा अगर एयरवे सेंटर लाइन पे नहीं होगा एयरक्राफ्ट तो ही हम सॉल्व करेंगे। कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस ऑफ ट्रैक बनाए सिवा नहीं पता चलेगा। बट द गुड थिंग इज योर CDI shows you up to 10 nautical miles and CDI more than 10 भी दिखाएगा, but what is that more than 10 you don't know. It could be 11 also, it could be 50 also. ऐसा है। But accuracy starts from 10 onwards, like 10, 9, 8. इसलिए वी आर यूज कर रहे हैं 1/60 के बेसिस पे ही हमने सिस्टम्स बनाए हैं। तो पहले 1/60 आया था, दैट्स व्हाई जनरल नेविगेशन में पढ़ रहे हो आप ये सब। बट सेम चीज आपका वहां पे भी पूछ रहे हैं वो लोग आपसे। इंस्ट्रूमेंट दिखा देंगे, ये सब पूछेंगे। इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखाएंगे, ये सब पूछेंगे। पूछेंगे तो यही ना आपका वो लोग। सॉल्व तो ये ऐसे ही होगा। चलो, गुड जॉब। क्वेश्चंस क्या आ रहा है आंसर सबको? चैतन्य वेरी गुड। पूरा करो आंसर। इट्स नॉट ऑन द एयरवे बिकॉज ऑफ द विड्थ इश्यू। एक्सप्लेन करो आंसर। करो, मेहनत करो सब लोग। Someone is asking, sir, shouldn't it be on the left? Now that is an interesting perspective, students. Am I on right or am I on left depends upon my direction of flight. If my aircraft was going in this direction, only then I was on right of track. But right now, my aircraft is flying in this direction. So where am I with respect to this track? This is the right and this is the left. So my aircraft is left of track. So this is the correct answer. Suchita, good job. I was just waiting for someone to say that. Because focus students, our hypothesis was that the aircraft is flying away. So now the right left changes. Left. Why left? Because of QDR. So this is the weakness that students can never overcome in exams, which you will never have to go through if you study through this perspective, and you don't have to solve papers to give correct questions in the exam also. उस हिसाब से आपको पढ़ाता है। तो बोल रहा हूँ आपको मैं, आप सॉल्व करके जाना सब लोग, प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। But yeah, I am always that confident about anyone who is doing 100% in the class. So QDR है तो आपको राइट लेफ्ट QDR के बेसिस पे समझना है। QDM है तो QDM के बेसिस पे समझना है। प्लीज रिमेंबर दिस। नहीं तो इतना मेहनत करके भी हमारा क्वेश्चन में ऑप्शन गलत मार्क हो जाएगा एंड हमें फिर 69 पे रह जाएंगे और फिर बहुत दुख होगा। बहुत दुख होगा फिर। राइट? ऑल द जीनियसेस जिन्होंने राइट लिखा, व्हाट डू यू हैव टू से फॉर योरसेल्फ? आर यू गोइंग टू बी केयरफुल? वाज इट अ सिली मिस्टेक, समथिंग दैट वी डिडंट फोकस, और आर वी जस्ट रशिंग टू आंसर? जो भी है, टेल योरसेल्फ एंड डोंट डू दैट अगेन। टॉक टू मी। सबने राइट लिखा है। विष्णुप्रिया ने लेफ्ट लिखा है एंड सुचिता ने राइट करके लेफ्ट किया। सिंपल, शी रियलाइज्ड द मिस्टेक क्विकली। तो उसने लेफ्ट ही किया, मिस्टेक किया ही नहीं, बट शी वाज ऑनेस्ट विद द वे शी वाज टेक्स्टिंग। तब अपने आंसर करेक्ट करो और वापस से रीसबमिट करो। मतलब मैं समझ जाऊंगा आपको आ गया है। आप रीसबमिट नहीं कर रहे हो मतलब समझ जाएंगे आप कंफ्यूज्ड हो, है ना? चैतन्य एंड प्रेरित। प्रेरित कहाँ है? तुम्हें नहीं समझ आ रहा है? किधर हो? Sir, I'm typing and sending. सुचिता, मुस्कान, ज्योत्सना, एनी डाउट्स? विष्णुप्रिया, प्रेरित, एनी डाउट्स? चैतन्य, एनी डाउट्स? अपन आप लोग साथ हो, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ 6 ही नाम ले रहा हूँ। प्रेरित करेक्ट,
चैतन्य आंसर करेक्ट किया है बट फिर क्वेश्चन नंबर नहीं दिया है. प्लीज यार, मैं बोलना बंद कर दूंगा बार बार एक ही चीज. अभी आपने आंसर करेक्ट कर दिया तो क्वेश्चन वो अभी आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड इट. इतना क्या मुश्किल है यार. बच्चा लोग कम ऑन यार, these little things are so smart. अभी है ना, we have a question in the class. How to realize whether to plot it inbound or outbound? अभी मैं वो चीज बोल चुका हूँ 5 बार. Try to recollect. Who can give this answer? I want somebody to try and come up with an answer. नहीं पता चला तो मैं बताऊंगा यार. I am not lazy. जितना मैं भाषण दे रहा हूँ उसके 1% में आंसर दे सकता हूँ मैं. प्रेरित ज्योत्सना, हाउ टू रियलाइज वेदर टू प्लॉट इट इनबाउंड और आउटबाउंड? नहीं पता आंसर? सुचिता, विष्णुप्रिया, यू डोंट नो द आंसर? चेतन हाथ when नीचे क्यों कर दिया? नहीं, इफ यू ऑल नो रेज योर हैंड स्टूडेंट्स. हाथ तो ऐसे नीचे रख रहे हो जैसे दुख रहा है हाथ तुम्हारा. ओके. प्रेरित, हाउ टू रियलाइज वेदर टू प्लॉट इनबाउंड और आउटबाउंड? नहीं आता ही नहीं आता है. सोचो. चलो, चार्ली होटल अल्फा, ट्राई गो विथ आंसर. सही गलत की टेंशन नहीं है, अच्छे से आंसर देना है. बट सही देना है, ट्राई करना. Sir, if it is mentioned QDR, then it is outbound. Excellent. Muskan, your If it is answer? DM, then it is inbound. Okay, sorry, disconnection. Chaitanya, if it is QDR, it is outbound. What did you say after that? Sir, and it is QDM, then inbound. Very good. Good answer. I can accept that. Well done. Muskan, your answer? Sir, if it is QDR, that is magnetic direction from, it means we are going out, so that's why outbound. And QDM is magnetic directions to the station, that's why it is inbound. वेरी गुड. लाइक चैतन्य ने करेक्ट दिया, आपने और डेप्थ में समझाया उसको कि आर टू एंड फ्रॉम भी कनेक्ट किया है. वेरी गुड. चैतन्य, अपने आंसर में टू एंड फ्रॉम भी ऐड कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, करेक्ट है आंसर. वेरी गुड मुस्कान. सुचिता? so radials are QDR, which means that it is magnetic bearing from the station. So we are going out from the station. And if we have QDM in the question, first we'll plot the QDR because they are the radials, and then the QDM would mean that we are flying in the station, and so we can calculate that. Inbound. Yes, that is inbound. QDM is inbound, or flying to the station means inbound. Well said. Okay. Jyotsna? Yes. Answer for QDR, if the aircraft is flying from the station, then it will be outbound. And if the aircraft is flying to the station, it will be QDM. QDR is the bearing of to the station, and QDM is the direction in which the aircraft is flying. No. QDM is direction from the station is a wrong statement in your answer. Rest everything was correct. Say that again. Maybe slip of tongue hua hoga. Say that again. Let me hear that again. So QDR is aircraft flying from the station, Correct. and QDM is aircraft flying to the station. Correct. Correct. This is correct. Good. Yes, Vishnupriya? Sir, QDR is magnetic bearing from the station, so it is known as outbound because we are away from the station. And QDM is magnetic bearing to the stations, we are toward the station, so it is known as inbound. Correct. Vishnupriya, what's on your mind? Sorry, sir. Good answer. Anything Yes, sir. connected to it with respect to doubts? Anything on your mind? What's on your mind? That's what I'm asking. Any doubts? Any questions? Negative, sir. चैतन्य, समझ आया आपको? Affirm, sir. एक्सप्लेन करो. So
QDM is a magnetic bearing to the station, whereas QDR it is a magnetic bearing from the station. तो टू एंड फ्रॉम पे फोकस रखना है स्टूडेंट्स। आपका जो ये Yeah. सीडीआई होता है ना, आपका जो सीडीआई मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक छोटा सा टू एंड फ्रॉम इंडिकेटर में मिलेगा। दैट कंप्लीट्स योर इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आप क्यूडीएम फॉलो करो, लाइक इफ यू गोइंग टू द स्टेशन, मतलब आप ऐसे देख लो कि अभी मैं आपके सामने हूँ, आप स्टेशन हो, ठीक है? तो आई एम कमिंग टू यू। इफ आई एम कमिंग टू यू, ओके, इट मीन्स आगे का पूरा 180 डिग्री से ज्यादा, इफ यू सी द स्पैन, I'm coming to you, it means I'm going in the area, air traffic area. I'm going in the aerodrome. I'm flying inbound. When the station is ahead of me. Why? Because I'm tuned to the station. Because I'm using the station as my navigation aid. Now, let's say you are now flying off and you know the direction of the ground station right now. You're flying off and you're flying in a track opposite to me. So the track that you are going to take will be out of that station. That is outbound that station. The word bound will mean that you are bound to a particular ground station with respect to frequency matching. That you're using that as a reference. Not bound by actual change, but this is radio connectivity maintained. So for that, I'm flying from the VOR that I am flying to. You are flying from that VOR where I'm flying to that VOR. We both are going to the same station. Why am I talking about two aircrafts? Only then it makes sense. But let's discount that other aircraft. Let's just say that I'm talking about myself. If I'm headed to you and I'm flying there, then I know my heading, my QDM, both are the same, and which is nothing but 000 right now. Because I'm flying to the station. Assuming you are aligned to magnetic north. If I'm aligned to magnetic north, if you are not aligned to if you are also aligned to magnetic north, actually I'm flying to you at a track that is 180. So my QDM will be 180. But when you will be leaving out, you will also be on 180. How can my QDM be 180 and your QDR be 180? So your QDR will be the opposite of what I am doing. It will be 000. And that is the truth. That is the northbound signal coming in. So that is what you already know. Here, you're not 000. If I'm coming to you, my QDM is 180 because your QDR is 00. That is the real explanation. But our logical mind tries to tell us something else. So I can either take a QDR and fly with respect to this navigation aid. But do I want to fly to it or from it? I want to fly to it. Do I want to land there? Not necessary. No, I don't want to land there. I just want to fly to it. From there, I want to fly to another station. This is just en route. Okay. So you want to just fly by. Yeah, I want to fly by. Okay, so that's what is happening in this question. Nobody tells you that. Nobody tells you whether that's your destination. Sometimes in certain questions, they tell you it's a destination, it's just a en route navigation aid or something. But not in all questions. So you don't know, but you do know, okay, this is the station. If I'm flying to the station, I'm going to the station. Okay, good. If I'm from the station, I'm coming from the station. Okay, good. It means QDM inbound to. From QDR outbound. Three different, you get two tables. QDM, QDR. Second point, to, from, inbound, outbound. Reciprocal, QDR. Reciprocal, QDM. Simple. You make that table, you'll never forget it. It takes time, students, but you develop the skills. Right now, I'm happy you are getting it. Sure. Last question, okay? Quick. नहीं तो टाइम निकल जाएगा फिर. ये थोड़ा टफ है. देखो आपसे सॉल्व होता है कि नहीं. जो भी हिंट चाहिए मुझसे पूछो ओपन माइक रख के. ठीक है? So the one that we solved right now is called cross-track problems, off-track problems. With respect to whatever you're looking to find, the problem becomes that. The one that we're going to do right now is to find range from a
VOR. In bracket, you write obviously co-located DMA. Mention होना नहीं चाहिए, assumed होना चाहिए. Okay. With co-located DMA. Okay, easy question, but very tough to understand if you're not focused. Let's see. But good job, students, with respect to finding 9 nautical miles. Right and left was a trick question. Not really. 2 students out of 7 got it right. 5 of them didn't get it right. Make sure the next time that mistake doesn't happen. Be aware, okay? Aircraft flying at flight level 100 with following information. Okay. Ground speed 180 knots, 180 knots. VOR Bravo is tuned. Okay. Aircraft is tracking 0980 magnetic. Here I'll tell you what tracking means over here. Tracking means that the aircraft is flying in this direction, 0980. But is that the heading? That is not sure. Is that the flight path of the aircraft? Yes. The CG is tracing this. You all know what is 0980, that is east. So this aircraft is tracking east. It means it is flying east. It is having a flight direction that is going exactly in the east. Once again, will the heading be as good as east? Not necessary. There could be a little bit of drift to account for that. My heading could be either on the left or the right of the actual track 0980. But my aircraft will track 0980. So that is what tracking means. Make sure you add a note to it. Otherwise, it will be very difficult to understand such questions if you don't know what tracking means. Whenever say you are tracking something, you say, I'm tracking that particular direction. That is not with respect to any VOR station. It could be the same thing. I could say, okay, for me, that is 180 magnetic direction. If the station is there, I'm going 180 right now. I'm tracking 180. If there is no wind, my heading will also be 180. What is my QDR? My QDR with respect to that station is also 180 right now. Is it really? No, it is 000 because that station is aligned with respect to the magnetic north. Yes, that is the correct explanation. So there is this one point that could always confuse you from getting correct answers, even when you come up with when you keep climbing on the staircase of the correct answers. You just stay one step ahead of the final answer because here you get stuck. The answer automatic comes as अरे QDR भी 180 ही लग रहा है. नहीं हो सकता है बिकॉज वो नॉर्थ से अलाइंड है, ये नॉर्थ है क्योंकि ये साउथ है, मैं साउथ जा रहा हूँ तो नॉर्थ मेरा ऑपोजिट होगा, सो वो रेडियल 00 ही हो सकता है. वन वे और द अदर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग देयर. This is called subject mastery, students. So aircraft is tracking 0980. Okay. At 1100 hours, aircraft is at QDM
357 with VOR B, that is Bravo. After 5 minutes, aircraft is found at QDM 002 with respect to VOR B. Okay? Calculate the range of the aircraft with respect to VOR B. Range will mean how many nautical miles with respect to the ground station. Now, students, I want you all to make the VOR. I want you all to make the heading of the aircraft considering zero wind. So if heading is east, tracking will be east. But where will you make it with respect to the station? You have two hints. Two hints are at 1100, that is 11 in the morning. It is at a QDM 357. And after 5 minutes, that is 11:05, it is at a QDM 002. So they've given you a flight path. And you know the flight path is flying in direction east. Only if you could plot 357 at least once, then you know go straight east, you would get the 002. Only if you could get the starting point. So where do you plot 357? Where do you plot 357 QDM with respect to a VOR station? For that, you find out QDR of 357. Then plot that QDR. Wherever that QDR is, that is where your QDM is 357. That is what I've taught you to be used in such places. And from there, you make east and calculate how much distance you have traveled in 5 minutes with respect to the speed that you have. You can use your CX3 also directly. So you get the distance, you know the angular difference. How much is the angular difference? 357, 002, 5 degrees. 5 degrees, opposite is found with respect to speed. Range is nothing but the adjacent in this case. And I'll find the adjacent. That is how I get the range. Here also I see nothing else. If I know how to plot a basic thing like QDM, I can use 1/60 and solve where I have radio navigation system numerical. Here if I say aircraft is at QDM, here you'll say aircraft RMI shows QDM 357. That's all they will do in the examination. And you'll be like, oh, RMI, RMI, RMI. Arre, kya RMI? Sab RMI is nothing. RMI is nothing. Just like a wristwatch. Any instrument is just like reading a wristwatch. Ask a 1 year any kid who has not learned how to read a watch. For them, it must be like, wow, what is that? Someone who knows, like, hey, it's easy. You need to learn. Remember that. That's it. Chalo. Range. Who can tell me? Show me your diagrams. If you need help, tell me. मैंने verbally तो सब समझा दिया है. सिर्फ करके नहीं दिखाया. Waiting for your answers. Muskan, theta is good. Students, make a correction in the question. Okay? Make a correction in the question. Instead of tracking,
09 or 0, make it tracking 270. Okay? Keep everything the same. So instead of east, the aircraft is going west. Consider 0 wind, so heading and tracking will be the same. At 1100, you are at 357 QDM. Okay? And at 1105, you are at 002 QDM. Find out the range. Muskan, excellent. Range तो सही आ गई. Very good. Show me your exact diagram, Muskan. Tracking 270 कर लो बस. और चैतन्य आंसर नहीं आया है. चैतन्य आपको तो जल्दी से भेजना है. भूल गए पिछले क्लास में क्या बोला था आपको. ध्यान दो थोड़ा. बताओ क्या चल रहा है. Are you solving or not? I'm making the diagram. QDM. भेजो ना. फोटो नहीं आया अभी तक. स्टूडेंट्स एक भी डायग्राम नहीं आया मुझे. सिर्फ मुस्कान ने भेजा है. मुस्कान को आंसर भी मिल गया. मुस्कान आप जा सकते हो. हाँ, हो गया सेशन. कल शाम को सेम टाइम क्लास होगी. आप 4:30 रेडी हो जाना. 4:30 या 5 लेक्चर स्टार्ट होगा. बट आप लोग 4:30 स्टार्ट होना. आप लोग 4:15 को ही लेक्चर लिंक मांगना. ठीक है. अगर लग रहा है कि सेशन 4:30 स्टार्ट नहीं हो रहा, यू ऑल सिट स्टडी रिवाइज. 5 o'clock it will start. But 4:30 is the time you have to be ready, students. मुस्कान, you are done. Good job. If you want to leave, you can leave. Okay. क्या चल रहा है बाकी लोग का. Very good. Perfect. Good. स्टूडेंट्स रिमेंबर ऑपोजिट कैसे निकालोगे आप डायग्राम में. स्पीड 180 नॉट से 5 मिनट में. सो 180 नॉटिकल माइल्स इन 1 hour. So how many nautical miles in 5 minutes? So 180 in 60 minutes. How many in 5? CX3 पे कर लो, डायरेक्ट मिल जाएगा. 60 पे नहीं कर सकते हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा आपको. So 180 in 60 minutes. Then how much in 5? I'm not sure if this is the right way. Let's check. 180 15. into क्या 5 minutes ना क्या 15. 180 into 5 divided by 60. क्या मिल रहा है. 15 nautical miles. अच्छा आंसर दे रहे थे. करेक्ट. 15 nautical miles. तो मैंने 15 nautical miles ट्राई किया. मुझे रेंज निकालनी है. बट मेरा डायग्राम मिसिंग है अभी भी. मुझे डायग्राम चाहिए स्टूडेंट्स. बिना डायग्राम के आंसर करेक्ट नहीं है. Opposite upon adjacent and theta. Theta is what? 5 degrees, right? तो हमें क्या ढूंढना है. रेंज ढूंढनी है, राइट. So theta is equal to opposite upon adjacent into 60. 5 divided by opposite was 15. ऐसे नहीं करेंगे. इसको ऐसे करेंगे हम. इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे बस. तो adjacent is equal to opposite into 60 upon theta. Is equal to opposite क्या है. 15 into 60 upon 5. I'm not sure if it's right. Okay, I'm just checking. So 180 nautical miles. अभी तो देखो हम इतने जीनियस हो गए हैं कि हम बिना डायग्राम के भी आंसर बना पा रहे हैं. बट मेरे को क्यों. क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है. आई नो आई हैव प्रैक्टिस्ड. फाइन. हाउ मेनी टाइम्स हैव आई प्रैक्टिस्ड जस्ट विथ यू. So even you have practiced that much. Just ना क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है. वेरी गुड. यू गॉट द करेक्ट आंसर. अभी भी मुझे किसी के डायग्राम्स नहीं आ रहे हैं. स्टूडेंट्स सेंड मी द डायग्राम्स. आई विल टेक यू. आई विल नॉट लेट यू गो. ज्योत्सना का आ गया है.
आह 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 ज्योत्सना गड़बड़। आह डायग्राम अपने आप में पॉसिबल नहीं है। जो आपने बनाया है ना, इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी। यू कैन नॉट डू दोज टू थिंग्स इन द सेम डायग्राम। इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या मिस्टेक है इतनी? अभी भी एक अंडरलाइन कंफ्यूजन है ज्योत्सना, क्लैरिफाई करके ही जाना है आज ये चीज। जहां रेडियल है वहां ही क्यूडीएम है, तो क्यूडीएम ऑपोजिट क्यों बनाया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखो मुझसे डिस्कस करो। प्रेरित परफेक्ट। सॉल्व करो। ट्रायंगल भी बना लो, सॉल्व करो। अच्छा बनाया। कोई देखेगा ये डायग्राम्स तो हम बुक्स में बोलेंगे यार सीपीएल में इतनी पढ़ाई होती है। हाँ यार होती है, क्यों नहीं होती। मजा है, मजे से पढ़ते हैं हम लोग। सुचिता गुड। सुचिता ने बीच में एक एयरक्राफ्ट बना दिया, बोले सर पता नहीं मैं कहाँ से कहूँ बट एयरक्राफ्ट जा यहाँ रही है। ठीक है, करेक्ट है। वेरी गुड। चलो आंसर्स भी दे दो, डायग्राम सही हैं जिनके जिनके। नहीं, और ऑलमोस्ट देयर बच्चा। एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग 270 कंफ्यूज कर रहे हो आप। आपने जो ट्रैकिंग बनाई है कहाँ जा रही है? आपकी एयरक्राफ्ट 002 जा रही है, एक 357 जा रही है। नहीं नहीं, क्यूडीएम सही है। आपकी एयरक्राफ्ट जा रही है 270 एक प्रॉपर रेंज पे। वो रेंज निकालनी है तो फिक्स डिस्टेंस है। तो जहां आपने पहले एयरक्राफ्ट बना रहे थे ना 090 जाने वाली, वो सही जगह पे एयरक्राफ्ट बनाई है, बस उसको 270 कर दो आप। तो जो पहली पॉइंट होगी क्यूडीएम 357 पे, वहां पे वो फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी 1100। और जो सेकंड पोजीशन है 002 पे, वो सेकंड पोजीशन हो जाएगी गोइंग वेस्ट। हो गया, बन गया डायग्राम। चार्ली ब्रावो अल्फा तुम्हारे लिए था वो। I'm not sure if you're following or not. If yes, correct it and send me. हो गया सबका? मुस्कान, ज्योत्सना, प्रेरित, सुचिता, चैतन्य। ठीक है। एक चैतन्य रह गया है। चार्ली होटल अल्फा। और विष्णुप्रिया रह गई। विष्णुप्रिया, फर्स्ट पोजीशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यही रेंज निकालनी है, ये फिक्स्ड होगी। 5 मिनट का ही डिफरेंस है। सेकंड पोजीशन उसी लाइन पे होगी 002 पे, बस एक्स बना दो। फर्स्ट पोजीशन का टाइम लिख दो 1100। सेकंड पोजीशन का टाइम लिख दो 1105। हो गया आपका डायग्राम परफेक्ट। एंगल है ना, व्यूअर के सेंटर से बनेगा कितना डिफरेंस, 5 डिग्रीज दोनों के बीच में। बनाओ रेंज अभी। सही जा रहा है आपका डायग्राम, देखने में लग रहा है इनकम्प्लीट पर इनकम्प्लीट है नहीं। चैतन्य, आप बहुत कुछ कंफ्यूजन में हो। अभी हमने सब कुछ वेरीफाई किया, आपने अभी सॉल्व किया है, उसी अप्रोच से आप करो। रेडियल बनानी है आपको, एक रेडियल नहीं बनाई आपने। आपने व्यूआर बनाया है, और व्यूआर से आपने जो क्यूडीएम 357 दिया है, वो क्यूडीएम नहीं है। वो 357 वो बाहर जा रहा है स्टेशन से, तो वो क्यूडीआर होना चाहिए। यहाँ से ही आपने गलती शुरू की और आप अटक गए हो। अब क्या कर सकते हैं आप बताओ। हम्म। मतलब नहीं पढ़ना आपको तो मत पढ़ो ना, कौन बिठा रहा है आपको जबरदस्ती क्लास में? क्या करूँ इसका मैं? What is The this aircraft supposed to is mean? What is going this supposed to towards. mean? No, this is not done. What is this supposed to mean? ये पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें। एक तो मेरा ये बैकग्राउंड ब्लर भी नहीं चल रहा है, उसकी वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। व्हाट इज दिस? एयरक्राफ्ट जा रहा है 270 में, समझ आ गया है। बट इस डायग्राम के हिसाब से एयरक्राफ्ट रेडियल भी 270 ही है व्यूअर के। और आपने क्यूडीएम 357 क्या हिसाब से बनाया? वो क्यूडीएम नहीं है, वो तो स्टेशन से बाहर निकल रहा है। 357 सही है बट वो तो क्यूडीआर है। तो आपने 270 ट्रैकिंग सही बनाई है, बट ट्रैकिंग इज ऑन अ रेडियल 270। एंड जो आपने क्यूडीएम दिया है 357, वो एक्चुअली क्यूडीआर है। तो आपने जो चीजें बनाई है, आप उनको कुछ गलत बोल रहे हो या गलत चीज को गलत बना रहे हो। मैंने आपको बोल दिया आपने क्या बनाया। मैंने कितना टेक्निक दिया है, पहले सब लोग प्लस बना लो, क्यूडीआर बना लो। क्यूडीआर बनाना नहीं आ रहा तो पूछो ना मुझसे, बता रहा हूँ ना। क्लॉकवाइज फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ है यहाँ पे तुम्हारे व्यूअर पे? पहले वाले डायग्राम में जो फॉलो की थी टेक्निक तुमने, वही टेक्निक फॉलो करो। दिमाग को ट्रेन करो ना थोड़ा। अभी पकड़ा था दिमाग ने कुछ, तो फिर से छोड़ दिया दिमाग ने, वो उसको बोलो यार पकड़ के रखे।
जोसना प्लीज क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दो अपने आंसर में, रह गया है। दूसरा डायग्राम तो सही कर दिया, एयरक्राफ्ट भी बना दो, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, समझेगी तुम्हें समझाए नहीं समझाए। चलो, eyes on the board everyone, I'll show you how it's done। चैतन्य नहीं करना तो बोल दो। हाँ, और ये सब पढ़ाई हुई चीजें हैं, लाइव लाइव पढ़ाई हुई चीजें हैं ये सब। दोबारा से लाइव पढ़ा चुका हूं आज ही, एक सम पे 2 घंटा ले रहे हैं हम। फिर भी अगर हम सही नहीं कर रहे तो आप सोच लो प्रॉब्लम कहां पे है। उस पे काम करो और मुझसे डिस्कस करो और उसको सॉर्ट करो। बन गया मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ, ये बन गया मेरे कार्डिनल पॉइंट्स। ओके, माय एयरक्राफ्ट हैज 2 QDMs, right? 2 points of time, 1100 and 1105 at a speed 180. My aircraft is tracking west. What is the first thing that will give me an orientation with respect to station? It is QDR only. I don't know the range, but QDR will tell me where am I. रेंज 1 हो या 100 हो, मैं एक लाइन से उसको अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, पहला मेरा QDM है 357, QDM दिया मेरे को दो, और दूसरा QDM है 002। बस, तो मैं कैसे कहाँ बनाऊंगा QDM? तो मेरे को पता है QDM बनाने के लिए उनका QDR निकालो, जहाँ QDR है उसी लाइन पे मेरा QDM है। ओके, ये टेक्निक याद है मुझे, नहीं है तो लिख लो यार। हाँ मुझे याद है, तो ठीक है। QDM 357, therefore QDR is equal to reciprocal of 357, 357 plus 180। और ये टू एंड फ्रॉम आपको CX3 में डायरेक्ट मिलता है बाय द वे। CX3 इन देयर इज अ फंक्शन टू एंड फ्रॉम, टू QDM 2 में डाल दो, फ्रॉम मिल जाएगा आपको। 357 plus 180 is equal to 537। एनीथिंग अबाउ 360 डिडक्ट करो, 360 आई गेट 177। सो ये मेरा फर्स्ट पोजीशन है 111100 पे। एयरक्राफ्ट जा रहा है मेरा वेस्ट। तो मेरा एयरक्राफ्ट जब QDM 357 है तो QDR 177 है। QDR बना लो, ढूंढना क्या है मुझे? रेंज। QDR क्या है? मैग्नेटिक रेडियल्स फ्रॉम द स्टेशन। विच इज द फर्स्ट रेडियल? दिस इज द फर्स्ट रेडियल। This is the second radial that I make with respect to cardinal points. This 0980. Have I forgotten this, Chaitanya? Remember this, please. This is for everyone. I'm showing you how to answer this question. You have to go through these steps. You have to execute what you have learned in class 1. Directions. Why are you not applying it, students? I don't understand. Do you think I'm crazy to keep barking that focus on basics, focus on basics? Do you think I am crazy person and you are over smart, that you'll discount basics? Where is 177? I get 177 close to 180. This I know is 180. So I get 177 very close to this 177 QDR. So this QDR gives me my QDM 357. Irrespective of my aircraft heading, बोल चुके हैं हम। तो मेरा एयरक्राफ्ट इस लाइन पे है, बस हो गया। और कौन से डायरेक्शन में जा रहा है एयरक्राफ्ट? 270। लो, बना दिया, हो गया, मिल गया फर्स्ट पोजीशन 1100 आवर्स। बस मुझे ये रेंज निकालनी है, कहीं भी ले लो इसको एयरक्राफ्ट को, विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन, वही तो निकालना है। दिस रेंज इज व्हाट वी नीड।
अब वो क्या बोल रहे हैं, 5 मिनट में आपकी एयरक्राफ्ट कहाँ तक गई है? भाई मैं, मेरी एयरक्राफ्ट कहीं तक तो आई है, कहाँ तक आई है आपकी 5 मिनट एयरक्राफ्ट? 5 मिनट की आपकी एयरक्राफ्ट आई है QDM 002। तो ठीक है, QDR निकाल लो 002 का, सीधा है, QDR निकाल लो। तो +180, 002 +180, 182, रेडियल 182। कहाँ है रेडियल 182? ये रहा मेरा रेडियल 182, इतना तो अभी देख के पता चल रहा है मुझे। 182, दिस इज माई रेडियल QDR। तो मतलब मेरा एयरक्राफ्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है मेरा नया पोजीशन एयरक्राफ्ट का, 1105। बन गया मेरा ट्रायंगल। अभी मैंने ये जो डिस्टेंस है 5 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये तो मिल गया ना चेतन? ये तो आपको भी मिल गया 5 नॉटिकल माइल्स, 15 नॉटिकल माइल्स। तो ये मुझे मिल गया 15 नॉटिकल माइल्स। मेरा एंगुलर डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? 357 एंड 002 के बीच में 5 डिग्रीज का डिफरेंस है, 5 डिग्रीज। ये बन गया मेरा वेलोसिटी ट्रायंगल, नॉट वेलोसिटी ट्रायंगल, 1/60 का ट्रायंगल। 5 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट 15 अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट ही तो रेंज हो गया ना। रेंज में क्या है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इट्स ऑल द सेम। द डिफरेंस इज नॉट मच बिकॉज ऑफ द एंगुलर डिफरेंस। रेंज जनरली इज द क्लोजेस्ट पॉइंट, सो जनरली दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग हियर। तो वो 90 डिग्री ऑटोमेटिक बन जाता है, द क्लोजेस्ट पॉइंट अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट ही तो मुझे ढूंढना है, माई रेंज इंटू 60। रेंज को वहां लेके जाता हूं मैं। रेंज इज इक्वल टू 15 इंटू 60 अपॉन 5। माई रेंज इज 180 नॉटिकल माइल्स। रेंज ढूंढ रहे हैं ना हम? क्या ढूंढ रहे हैं हम? रेंज ढूंढ रहे हैं। जो आपको अभी मैंने टेक्निक दिया ना स्टूडेंट्स, आपको जो टेक्निक दिया, बहुत मुश्किल से वो टेक्निक आई है हाथ, ये कॉन्सेप्ट को इतना आसानी से समझने के लिए, बहुत मुश्किल से। जो तुम यूज नहीं कर रहे हो, तुमको हाथ में स्पून फीडिंग मिल रहा है और तुम यूज नहीं कर रहे हो। याद ही तो करना है, समझ जाना है, याद करना है। नहीं समझ बोले सर याद तो कर लिया, समझ नहीं आया। यार समझने की क्या बात है, रेसिप्रोकल है यार, क्यूडीआर का रेसिप्रोकल और क्या होगा, क्यूडीएम नहीं होगा तो तुम बताओ। तो तुम तब तक देखो, उस चीज को स्टडी करो, तब तक क्लिक ना हो वो तुम्हें। चैतन्य भेजो, डायग्राम भेजो मुझे। विष्णुप्रिया, सुचिता, मुस्कान, ज्योत्सना, प्रेरित। डाउट्स? Negative, sir. हम्म Sir, I don't get that 15 nautical miles, or else everything is clear. Your aircraft ground speed is 180 nautical miles per hour. You have traveled from 1100 to 1105 in 5 minutes at 180 knots. So how much distance would you have traveled in that much of time? Find that out. 5 minutes में आपने कितना distance travel किया है using your ground speed which is 180 nautical miles per hour. Either use your CX3 or use this that I have just taught you right now over Yes, here. sir, got it, got it. This. Yes, sir, got it. Focus. Force your mind, students, to grasp everything. I know it's complicated, but push yourself. नहीं आ रहा पूछो सर, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बताओ अच्छे से मुझे। विश्वप्रिया बताओ, ये कैसे नहीं याद आ रहा था बताओ। आई नो दिस कुड बी कंफ्यूजिंग। आपको क्या कंफ्यूजन थी वो बताओ। नहीं सर, सर वो वाला जो डायग्राम क्या था वो क्या था, पर उसको कन्वर्ट करने के लिए नॉटिकल माइल्स में वो मेरा कंफ्यूजन था, तो अभी क्लियर हो गया। इट इज ट्रिकी स्टूडेंट्स, दिस कन्वर्जन इज ट्रिकी, यू नीड टू नो। मैंने तो ऐसे आसानी से बोल दिया है। हाउ डू यू फिगर आउट व्हाट इज योर ऑपोजिट इन दिस केस? You determine कितना वो distance travel हुआ है with your ground speed. This is another weapon you have while solving navigation or general navigation.
बट ये सब CX3 में इजीली मिलता है. आई होप यू ऑल रिमेंबर, प्ले विथ योर CX3 ऑल द टाइम स्टूडेंट्स. प्ले एज इन फाइंड आउट, फाइंड थिंग्स, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. जोतना सही बनाया है, बट एयरक्राफ्ट को रेडियल पे ही रखना था, एयरक्राफ्ट का CG. अभी आपका एयरक्राफ्ट का दोनों रेडियल चेंज हो चुका है, दोनों QDM भी चेंज हो गया विद रिस्पेक्ट टू जो लाइन तुमने बनाई है एंड विद रिस्पेक्ट टू जहाँ पे एयरक्राफ्ट तुमने बनाया. आई एम जस्ट सेइंग, आई नो योर अंडरस्टैंडिंग इज दैट, बट कोई अगर डायग्राम पढ़ेगा तो उसको लगेगा ठीक है, मेरा एयरक्राफ्ट अब तक QDM पे आया नहीं है, और वो एयरक्राफ्ट मतलब 357 QDM पे आया नहीं है, और वो जो दूसरा एयरक्राफ्ट है वो छोड़ चुका है. बट डायग्राम सही है क्वेश्चन के हिसाब से, एयरक्राफ्ट प्लॉटिंग सही नहीं है बस. बाद में क्या होगा ना, जब रिवाइज करेंगे ना समझ नहीं आएगा. इसलिए बोल रहा हूँ, बी वेरी केयरफुल स्टूडेंट्स, एंड जो भी है अभी डिस्कस कर लो अच्छे से. चेतन ने 2 एयरक्राफ्ट क्यों बनाई है आपने डायग्राम में? एंगल मेंशन नहीं है. सर ऐसे उसका कुछ मीनिंग नहीं है. आई हैव मेड द फर्स्ट डायग्राम एट जो 357 क्यूब. फर्स्ट एयरक्राफ्ट ऊपर क्या कर रही है वो मेरे को पता नहीं है. आप बस 4 डायरेक्शंस बना लो ना. आपने कार्डिनल पॉइंट्स नहीं बनाए, आपने मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं बनाया, पूरा ट्रायंगल नहीं बनाया आपने, और मेरे को डायग्राम में एंगल भी नहीं दिखा रहे हो. बेटर देन बिफोर ऑफ कोर्स, एक्यूरेसी भी है, बट मैंने तो अभी बना दिया. यू कैन इजीली कॉपी पेस्ट ऑल्सो, सो आई डोंट नो. एक और क्वेश्चन दूंगा तभी पता चलेगा. बट पूरा तो सर आई कम से कम. अंडरस्टूड अभी दिस. खुद को नहीं समझेगा, पूरा करके भेजो. तुम बोलते हो अंडरस्टूड, बट तुम समझते नहीं हो. आई डोंट नो व्हाई द डुअलिटी. आई आई ट्रस्ट यू कि तुम समझ गए हो, बाद में पता चलता है नहीं समझे हो. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. नहीं समझा तो नहीं समझा ना, बोलने का टाइम लग रहा है मुझे, उसमें क्या हो गया. आई कैन बी द स्लोएस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, आई डोंट माइंड. अच्छा लगता है आराम से पढ़ाई करने को. चलो डू वन मोर सम. स्टूडेंट्स किसी को लेट हो रहा है, कहीं आपको कुछ पूजा वूजा करनी है, प्लीज यू कैन गो. इफ यू हैव टू कुक डिनर यू कैन गो 6:30 के हिसाब से. अदरवाइज जस्ट सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. यू कैन टेक्स्ट मी एंड गो, नो प्रॉब्लम. Y'all just think this is a joke. I'm not saying to everyone, but most of us. I have another student who is above a certain age, and some airlines don't hire, okay, freshers. But we know that hiring हो जाती है, okay, eventually, if you keep trying. कहीं ना कहीं जहाँ पे एलिजिबल है वहाँ हो जाती है. अब आ रही है वैकेंसीज. अरे वाह, CPL नहीं है, CPL नहीं है, मेरे को CPL चाहिए, मेरा डिले हो रहा है, राइट. ये कंसर्न रहता है ना सबको. CPL भी है, टाइप रेटिंग भी है, इश्यूज भी है, डेडिकेशन भी है, पैशन भी है. फिर भी एग्जाम मेरी है सैटरडे को, आज है ट्यूसडे, आज है वेनेसडे, और मेरे को तैयारी करनी है CPL सब्जेक्ट्स की, चारों की. कि मेरा फर्स्ट पेपर में वही सब पूछा जाता है. फ्रेशर के इंटरव्यू में भी पता है, अभी भी वही चल रहा है जो मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, जो हमारे पहले कॉल पे बताता हूँ मैं सबको मोस्ट ऑफ द टाइम. अब लगता है 3-4 दिन में हो जाएगी पढ़ाई बेचारे की. नहीं होगी यार. बट हम तो पॉजिटिव माइंडसेट से जाएंगे, जितना करना चाहे करेंगे. तो क्या हमने तब अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी जब भी पेपर क्लियर किए थे 2-3 साल पहले? की थी यार. ऑफ कोर्स पेपर निकाले हैं, पेपर है ना, हाँ. फिर भी इंटरव्यू के लिए रेडी क्यों नहीं है हम? दैट इज रियलिटी, दैट इज हैपनिंग टू द बेस्ट ऑफ अस. इसीलिए तुम्हारे स्ट्रैटेजी में डाल रहे हैं अभी से कि इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि तुम्हें वहां पे दिक्कत ना हो. फिर भी होती है दिक्कत जेन्युइनली पढ़ने के बाद भी, अगर आप रेगुलरली ना पढ़ो तो.
तो जब आपको पढ़ना चाहिए तभी आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, तो बाद में तो कैसे पहुंचोगे आप, क्या कर लोगे? 1000 लाइसेंसेस का जब इंटरव्यू पास नहीं कर पाओगे, तो जब आ जाके आपको यही देना है इंटरव्यू में जो यहाँ पढ़ रहे हो। इट्स नॉट इजी। उस टाइम पे 3-4 दिन के दिन में इतना सब पढ़ना होता है, 3-4 दिन में, उसमें 5 घंटे भी आप दे दो ना, पता नहीं चलता 5 घंटे में, क्योंकि तुम्हें पता है ऐसे पढ़ते हैं ना, 3 से 4 ही कॉन्सेप्ट समझ में आता है। वो फास्ट कब होता है? जब हम बहुत ज्यादा रेडी होते हैं। I'm talking about things happening in the present week before. People are missing out on rare opportunity coming after 4-5 years just because of what I'm trying to prevent right now. चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हें मैं कल दूंगा इसी कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करूंगा। आई वांट टू स्टार्ट वेट एंड बैलेंस फाइनल प्रेप। मैंने देखा उसमें काफी लोगों को मिस्टेक्स हो रही हैं, एंड उसके बाद आपके वो बाकी जो भी सिस्टम रिलेटेड हैं वो उठाने हैं, थियरी बेस्ड जो कवर नहीं हुआ है, बट पहले नेविगेशन के न्यूमेरिकल्स बेस्ड हमें टारगेट करने हैं। तो वेट एंड बैलेंस हो जाता है, उसके बाद वी हैव टू जंप अपॉन टू वीओआर एंड आरएमआई क्वेश्चंस डायरेक्ट, जो अभी ऑलरेडी कर रहे हैं हम लोग। बट अगर आप ये लोग अच्छे से नहीं करोगे और मैं सिर्फ लेक्चर पे लेक्चर देता जाऊंगा ना, पता चलेगा 10 लेक्चर हो गए और तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो गया। फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा से मैं लाइव लेक्चर में नहीं लूंगा, रिकॉर्डिंग्स दूंगा, चुपचाप अपनी स्पीड से पढ़ लेना, फिर 0.5 की। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। अगली बार किसी ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया और सिली मिस्टेक्स कर रहे हो जो नहीं होनी चाहिए, देन आई नॉट अलाउ यू इन द नेक्स्ट सेशन अनलेस यू प्रूव योर सेल्फ। तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बट यू हैव टू गेट सीरियस, अदरवाइज जो भी आगे पढ़ाऊंगा वो समझ नहीं आएगा, तो पॉइंटलेस है। मेरा बोलने का मतलब यह है, इतनी मेहनत मत करो गलत डायरेक्शन में। रिमेंबर 1/60 gives us a relationship between a length, an angle, and the length between the extreme points of these two lengths that are separated at an angle. For how far? For up to 20 degrees. Now, before I go, I can just show this to you in one way. If this is my circle, okay, then I know this is 90 degree. So I'm just showing this to you. The relationship generally is like this. This is the opposite. One as, and these are the adjacents, right? This becomes the opposite. This becomes the adjacent. Now, wherever there is a circle, the pi and everything are there in the formula. I'm not showing you the formula theory, but what I'm trying to show you is something similar to this and why it has restrictions. And this is similar to the Earth being a curvature, we being in air and still using the higher altitude curve distances for ground distances. Okay, great cycle tracks and everything. Now my 1/60 rule is only applicable for up to 45. No. Then for up to 22.5, 22.5, no. But up to 20. So when I get this little 20-degree angle, I get a relationship. This relationship. That this adjacent side, one of the adjacent sides, or both are applicable in this case. This opposite side and this angle, they have a relationship. And the relationship has the word 60 because the 60 is derived from the circle only. वो पाए वाई आ जाता है यहाँ पे, वो अभी आपको पूरा नहीं एक्सप्लेन कर रहा मैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मुझे ये मिल जा रहा है, ये अप टू 20 degrees और लेस आई कैन यूज दिस फॉर्मूला साइड एंगल से, टॉप एंगल से, बॉटम एंगल से, कहीं से भी ले सकता हूँ। जहां जहां 20 डिग्री और लेस है, I need angular differences, the difference between the two, and the relationship can be found out by this formula. Never forget this. All you have to do is analyze the situation if and see whether it fits.
it will fit a triangle like this because you'll always be given some bearing, some heading, something or the other. You will be given some or the other references that will fill in. 60 is a constant here. Out of the three, 2 will be given to you, or you have to derive that. Like in opposite, we derived using 5 minutes. Now, Vishnupriya is not wrong to say, sir, I'm confused. First time, I remember this. First time I came across this, I'm like, okay, nothing is given directly. That was my point. When nothing is directly, I know it's a tough question with respect to exam questions. Now, how to solve it? Okay, I'll need some time. I took 20 minutes. I remember this question clearly. I'll never forget this. It took me 20 minutes to study it by myself whenever that had happened. How do I remember? Because it was one of those cases where I realized, okay, so there's a connectivity in everything. Of course, there is. That's what you do in exams. You connect what you have studied. That is aviation for you. When will you understand? Do you think I'm teaching you something that is non-aviation? Why? Why would I do that? Whatever I'm doing is much more at core with other people. If you look into the strategies, if you look into the quality, that is more business. This is more how it is supposed to be. तो फायदा उठाओ ना उसका. Next class tomorrow 4:30. Remember that, students. Okay, for navigation soft update, and that is the confirm update. Any other lectures you will be informed, but now this is the update. I'll see you tomorrow. Please do well. Don't be this slow. You will be given tests to practice. ऐसा रहेंगे तो टेस्ट में 30% भी नहीं आएंगे आपको, एंड फिर आप पैनिक कर जाओगे. मैं तो डांटूंगा ही सबके सामने, बट उससे फायदा नहीं होगा आपका. तो बेटर है कल और आज के बीच में जितना टाइम है उसमें अपने आप को सुधार लो, और कोई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है या कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर लो. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं और एग्जाम कल क्लास में वापस से ऐसा कर रहे हैं तो आपको मैं नेक्स्ट लाइव सेशन में नहीं लूंगा स्टूडेंट्स. ठीक है, आई विल सी यू next time. Any questions, let me know. Otherwise, you're free to leave, students. Imagine background noise going on. Music. Most welcome, students.